So last class we discussed photoelectric effect and Planck's quantum theory. So to the new student, I want to say that uh, we haven't covered yet much in this chapter, structure of atom. Okay, we are going to start a new topic from today. Probably you will understand it. So the new topic that we are going to start today is atomic spectrum. Okay, so can anyone tell me that what is a spectrum? बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर्स ओके जैसे रेनबो है सो रेनबो इज आल्सो अ स्पेक्ट्रम गॉट इट सो इसी तरीके से देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स वन इज continuous spectrum and another is discontinuous spectrum okay what is a continuous spectrum a continuous spectrum is the one in which the colors they merge into each other okay there is no discontinuity in that the colors they merge into each other so that is known as a continuous spectrum and a discontinuous spectrum means in which there are breaks so that is known as a discontinuous spectrum so what is the example of a continuous spectrum rainbow okay rainbow is the example of a continuous spectrum how because in a rainbow you can see that colors are merging into each other आप कभी भी जब आसमान में रेनबो देखते हो बारिश के बाद so you must have noticed that in that rainbow all the colors they are merging into each other ठीक है तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं आता है कलर्स के बीच में कंटिन्यूअसली कलर्स होते हैं उसमें ठीक है जैसे ही वॉयलेट से वॉयलेट कहाँ खत्म हुआ थोड़ा थोड़ा वहां से इंडिगो शुरू हो जाता है फिर वहीं से थोड़ा थोड़ा ब्लू शुरू हो जाता है कंटिन्यूअस बैंड है कलर्स का सो दैट इज नोन एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम this is the example of a discontinuous spectrum like you can see in this example ये वाला I hope सबको दिख रहा है everyone is able to see it yes or no Yes, sir. okay so you can what you can observe in this is that you can see that there are breaks in the color bands ठीक है यहाँ पर एक break आ गया this is also a break so there are breaks in this spectrum this is the example of a discontinuous spectrum okay so these are the two types of spectrum now what we have to study in this chapter is discontinuous spectrum we don't have to study continuous spectrum we have to study discontinuous spectrum. And what is the very good example of a discontinuous spectrum is atomic spectrum. Okay, the spectrum which is shown by atoms, they are known as atomic spectrum, which is an example of discontinuous spectrum. So atomic spectra, they are of two types. The first is absorption spectra and the second is emission spectra. What is absorption spectra? Absorption means when you are absorbing something. So this spectra is obtained when you are absorbing energy. So whenever atoms absorb energy, they reach from the lower orbit to the higher orbit and they show this spectrum which is absorption spectrum. Then what is emission spectrum? Emit means to radiate or to give out. So whenever atoms give out energy, whenever they radiate energy from themselves, so they jump from the excited state or from the higher orbit to the lower orbit. And in that case, they produce this kind of a spectrum, which is known as emission spectrum. So these are the two broad differences between the spectrums, absorption and emission. They may ask in 1 or 2 mark questions. Absorption is the one which is obtained when radiations are passed through a substance. Passed through a substance means when they are absorbed by the substance. And emission is the one produced when radiations are emitted by the substance. Then what is the kind of appearance that is there in absorption and emission? In absorption spectrum, we obtain
bright lines and they are separated by dark spaces. Like you can see in this example, आप यहाँ पे देखो, this is the first figure. It is of the both of these spectrums. They are the spectrums of hydrogen atom. Okay. So what you can observe in this is that the first one, this is an absorption spectrum of hydrogen. Now here you can see that there are broad color patches and there are thin dark lines. Yes. So this is the kind of absorption spectrum that we obtain. What is emission? Emission is like this. There are broad dark spaces and there are separate thin bright lines. अच्छा, यहाँ पर you can notice one thing कि जहाँ absorption में dark आ रहा था वहां पर emission में bright आ रहा है. ठीक है, इधर dark था इधर bright है, यहाँ dark था इधर bright है, और जहाँ जहाँ absorption में bright था उधर emission में dark आता है. ठीक है, so this is the basic difference between absorption and emission spectrum. So one of the drawbacks of Rutherford's model was that he was unable to explain the hydrogen spectrum. But this drawback was overcome when Bohr gave his atomic model and he gave an explanation for the hydrogen spectrum. Okay, so we are going to study that how this spectrum works. Now these are the energy levels, or you can say orbits. Okay, ये आपके orbits. So here we have different orbits, and to each orbit we have specified a number which is represented by n. So ये जो n is equal to 1 है, तो अलग-अलग जो ये orbits हैं इनको हमने नाम दे दिए हैं. ठीक है. Like the first one is that n is equal to 1. This is known as Lyman series. Lyman series corresponds to the ultraviolet region of the spectrum. Then n is equal to 2 is Balmer series, which corresponds to the visible region. Then n is equal to 3 is Paschen, n is equal to 4 is bracket, n is equal to 5 is fun. अब Paschen और Paschen के बाद के जितने भी हमारे lines होती हैं, they all correspond to the infrared. So first one is for ultraviolet, second is for visible, and 3 and after 3 all the lines they correspond to the infrared regions. Is it okay? So what happens is that when you have to make an electron or any substance go from lower orbit to the higher orbit, always there is absorption of energy. So whenever there is absorption of energy, the molecule or your atom or electron, it will be giving your absorption spectrum. And when it will jump from higher energy to the lower energy, it is going to radiate energy and it will giving the emission spectrum. ठीक है, ये समझ में आ गया. जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, और जब भी हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है और एमिशन स्पेक्ट्रम शो होता है. ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर. ओके, so these are the expressions for the difference in energies. We will be discussing it later after we will discuss the Bohr's orbit. Okay. So now we are going to study Bohr's atomic model. So अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था Rutherford's atomic model. We saw that Rutherford's atomic model, it was a very successful model, but there were some drawbacks, and those drawbacks were only because he didn't give some explanations. Like the main drawback that we saw that he didn't explain the stability of atoms, and also he didn't explain the concept of orbits. What are orbits? So these drawbacks are overcome by Bohr. So most of the postulates of Bohr's atomic model, they were same as that of Rutherford, that electrons, they revolve in circular paths which are known as orbits around the nucleus, and he did a slight change in that. पहला स्टेटमेंट तो यही है कि इलेक्ट्रॉन इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन पाथ व्हिच आर नोन एज ऑर्बिट्स, बट ही डिफाइंड ऑर्बिट्स. ठीक है, रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं किया था, इन्होंने डेफिनेशन दी ऑर्बिट्स की. सो ऑर्बिट्स की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, दैट ऑर्बिट इज गोइंग टू बी ओनली अ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्बिट. हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, कुछ स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर सकता है, और ये वो ऑर्बिट्स होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस. ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम. एल, एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. ठीक है, सो एल इज mvr.
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैंने बता दिया। ये आपका मोमेंटम तो सबको आई थिंक पता होगा ना, मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा हो, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो जो उसके साथ एसोसिएटेड मोमेंटम होता है दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो नॉर्मल जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय l, कैपिटल L. So expression for angular momentum is mvr. So Bohr said that only those orbits are allowed for the revolution of electrons in which the angular momentum is equal to nh upon 2 pi. That means it should be, this n is an integer. It can be 1, 2, or 3, and so on. Whole number or integer, whatever you say. So only those orbits are allowed in which this angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. If it is a fractional multiple, then that kind of orbit will not be allowed for the revolution of electrons. So here, the drawback that Rutherford was having, that there was no explanation for orbits, here this drawback overcome. Got it? So this is a very important expression that you have to learn, and this is also known as quantization of angular momentum. जब भी हम ऐसे किसी चीज के आगे ऐसे लिख देते हैं ना that this should be an integral multiple or for whole number multiple, so that is that एक हम term use करते हैं उसके लिए, that is known as quantization. So this expression, it is expression for the quantization of angular momentum. Got it? Then another drawback was that he was unable to explain the concept of hydrogen spectrum. So for that, he gave an explanation, this which is written in the second statement. This one. What he said that energy of an electron does not change with time. जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, ना तो इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है. But as soon as an electron will jump from the lower orbit to the higher orbit, the amount of energy is going to change. And what will be the amount of energy? How much change will be there in that energy? That change will be equal to the difference in the energies of those two orbits. Okay, that means here it is shown in this figure. Like suppose आपका electron पहले इस वाली orbit में था, जो n is equal to 1 वाली. ठीक है, ये जो आपकी n is equal to 1 है, पहले आपका इलेक्ट्रॉन इसमें था. अब जब तक आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन ने कहीं से एनर्जी गेन करी, तो वो एनर्जी गेन करके हायर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है. ठीक है, इस तरीके से. और कौन सी वाली स्टेट में जाएगा, वो उस स्टेट में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी गेन करी. ठीक है, और एनर्जी चेंज कितना आता है उस इलेक्ट्रॉन में, दैट एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू द चेंज डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दीज टू ऑर्बिट्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट द एनर्जी ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्बिट इट इज E1. ठीक है, और ये जो सेकेंड ऑर्बिट है, इसकी जो एनर्जी है ये है E2. So what is going to be the difference of these energies? E2 minus E1, है ना? तो अगर हम ये E2 माइनस E1 एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से उठ के सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा. ठीक है, नाउ सपोज आपकी ये जो थर्ड वाली ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E3 है. ठीक है, तो अगर आप E3 माइनस E2 एनर्जी प्रोवाइड करते हो इस इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये सेकेंड से उठ के थर्ड वाली ऑर्बिट में जंप कर जाता है. तो इस तरीके से अगर आप दोनों ऑर्बिट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, उतनी एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हो, तो फिर वो उठ करके नीचे वाली ऑर्बिट से ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाता है. एंड ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम लोअर टू हायर when it absorbs the energy, और हायर से लोअर वो तब आएगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा. क्योंकि ऊपर वाली जो ऑर्बिट्स होती है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो नीचे वाली ऑर्बिट्स होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट कहते हैं हम इसको. जो आपकी ओरिजिनल ऑर्बिट होती है, ये लाइक जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था. ठीक है, दिस वाज योर ओरिजिनल ऑर्बिट जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट
रिवॉल्व कर रहा था. सो दिस ऑर्बिट इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट. और जो भी आपकी हायर एनर्जी ऑर्बिट्स होती हैं 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दे दीज ऑर्बिट्स दे आर नोन एज द एक्साइटेड स्टेट्स. ठीक है, एक्साइटेड मतलब क्या, आप कब एक्साइटेड होते हो, जब आपके अंदर खूब एनर्जी होती है ना. तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी खूब सारी एनर्जी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, तो इट गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब वो नीचे वाली स्टेट पे, ग्राउंड पे. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, एंड यही आपका कॉन्सेप्ट होता है स्पेक्ट्रम का. स्पेक्ट्रम कैसे शो होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तभी आपका स्पेक्ट्रम शो होता है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस करा. Is it clear? Concept of energy difference, absorption and emission of energy. Sir, so Yes, the sir. electrons in outer orbits have more energy than the ones in the inner orbits? See, the thing is that energy, if you have more energy, if any species, either it is atom or it is molecule or it is ion or electron, if any species has more energy, then that species is always unstable. And if you have low energy, that means you are stable. So lowest the energy, more stable the species is. And electron is very stable in the ground state. The reason being because it is very close to the nucleus. So जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है इट हैज अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड इट हैज अ मिनिमम एनर्जी. बट जो आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है इट हैज द highest energy. Why? Because it has less stability. Electrons in higher state, it is very unstable. That's why it has more energy. और ग्राउंड स्टेट में आपकी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होती है, इसीलिए इसकी एनर्जी कम होती है. Got it? Hello. Yes, sir. You have to remember this point. This is going to be of very importance in 12th and 11th as well. That आपकी जितनी ज्यादा एनर्जी है उतना आपका कम होगा स्टेबिलिटी, उतना आपका स्पीशीज अनस्टेबल होगा. और जितनी आपकी स्टेबल एनर्जी कम होगी, मिनिमम इज द एनर्जी, द मोर यू विल बी हैविंग द स्टेबिलिटी. ठीक है, ओके. Sir, what do we use the angular momentum formula for in atoms? Like, what does it measure? एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, डू यू नो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम पता है क्या होता है? पढ़ा होगा फिजिक्स में भाई, 9th क्लास में हो सकता है पढ़ा हो. हैव यू रेड मोमेंटम? नहीं. Yes, तो sir. Yeah. हाँ, तो क्या होता है मोमेंटम, बताओ. Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, बट ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है कि आपका कितना, लाइक सपोज आपने सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार. ठीक है, तो आप कार ड्राइव करते करते अगर आप उस कार को तुरंत अगर आप इंजन अगर आप बंद कर देते हो उसको, तो ऐसा तो नहीं ना कि कार वहीं पर ही रुक जाती है, थोड़ा सा डिस्टेंस कार आगे ट्रेवल करती है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज मोमेंटम. नाउ इफ वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन, so that is known as angular momentum, and that is why angular momentum is used in this concept, because electrons are performing circular motion here. Okay. Yes, sir. Yeah. And this angular momentum, one more thing, it is a vector quantity. Okay. So I hope everyone must have understood the concept of orbits. Now orbits, they are also known as stationary states or energy levels. ठीक है, ये और भी नाम होते हैं. So whenever I use the word stationary state or energy level, it means that we are talking about orbits. Then we talked about energy concept. Okay. Now next important thing is that frequency of radiation. Now suppose that आपका electron जो है वो lower से higher orbit में गया है, so it must have absorbed some energy. ठीक है, like we just talked. So if you know that what is the amount of energy which is absorbed or radiated by that electron, so you can probably find out the frequency and wavelength of that radiation. है ना, like मैं last में discuss किया था, एक there is a relation between energy and frequency, yes or no?
एनर्जी एंड वेवलेंथ, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्कस किए थे नहीं किए थे? अरे हाँ ना तो Okay. बोलो। ठीक है, so here also you will be getting questions in which the electron will be absorbing or emitting energy when it is going from one orbit to another orbit. So the questions will come in which you'll have to find out the frequency of the radiation which is absorbed or emitted, or the wavelength of the radiation which is absorbed or emitted. So we will be doing such type of questions. Uh, Okay, so now what were the differences between the postulates that were given by Rutherford and Bohr? The differences were that Rutherford ने बस एक theory दे दी थी atom की, ठीक है? He just gave the postulates. There were no calculations of his theory that he gave. But what were the better points in Bohr's atomic model was that he gave some calculations. He gave some mathematical concepts that were defining the structure of atom. तो पहला तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने यही देख लिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. सेकंड वर दैट विद सम concepts of physics, he calculated the expressions for the radius of the orbit, the velocity of electron which is revolving in that orbit, and the energy of that orbit. ठीक है. So here we will be talking about the radius of that orbit. This is the expression for the radius. ये वाला आपको टर्म याद नहीं करना, ठीक है, because this is not in your syllabus. Although if you want to learn it from for the competition point of view, JEE means or NEET work etc, तो आप इसको learn कर सकते हो, नहीं तो वैसे NCERT में ये mention है नहीं. So you just have to learn this expression. This is the radius of the orbit, ठीक है. 0.529 into n square upon z angstrom. What is n? N is the orbit number. Principal quantum number means orbit number. N is equal to 1. K shell, L shell, M shell जो आपने 9th class में पढ़ा होगा, ठीक है. N को हम लोगों ने एक नाम दे दिया है which is principal quantum number. Okay. Then Z is the atomic number of that atom. Like for hydrogen it is 1, helium के लिए 2 होता है, lithium के लिए 3 होता है. So this is the expression for the radius of the particular orbit in which the electron is revolving. Okay, and this is a very important expression and you have to learn. Then we have expression for the velocity of the electron which is revolving in that particular orbit. So this is the expression for the velocity. Sorry, this one. Okay, example here. ये वाला है. This is the expression for the velocity of electron which is revolving in that orbit. Unit is meter per second. ठीक है. तो ये तो आपकी हो गई वेलोसिटी और रेडियस. फिर आपका आता है एनर्जी. सो एनर्जी को हम 3 यूनिट्स में निकालते हैं. वी फाइंड आउट एनर्जी इन 3 यूनिट्स. पहला है जूल पर एटम्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दिस वन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, एंड द थर्ड वन इज किलो जूल्स पर मोल. So you have to learn these 3 values, especially the second one. So this is the expression for the energy of that orbit. Actually, one thing you have to remember is that energy of the orbit will be equal to the energy of the electron which is revolving in that particular orbit. ठीक है. जब भी हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं या फिर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी ऑर्बिट की एनर्जी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की भी उतनी एनर्जी होगी. ठीक है. सो दिस इज योर वैल्यू फॉर एनर्जी. Got it? Now we know that this is the energy of a particular orbit. Okay, this is the expression for the energy of a particular orbit. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी पता है तो आप दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर, निकाल सकते हैं. हो ना, निकाल सकते हो ना. तो आपको एक काम करो, मुझे बताओ कि हाइड्रोजन एटम के लिए n इज इक्वल टू 3 से लेकर n इज इक्वल टू 1 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसमें कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा? निकालिए. सर n की वैल्यू रिपीट कर सकते हो? रिपीट मतलब सर ढंग से सुनाई नहीं दिया. बच्चे n आपकी ऑर्बिट नंबर है ना, जैसे आपके k शेल, l शेल, m शेल, n शेल ऐसे पढ़ा था नहीं ना सर, आपके बचपन में.
अच्छा n वो ओके हाँ, तो n आपका 1 2 3 4 होता है ऑर्बिट नंबर। 1 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच डिफाइंस द ऑर्बिट नंबर। गॉट इट? यस सर ठीक है, so suppose if your electron is there in n is equal to 3 and it is jumping from n is equal to 3 to n is equal to 1, so find out that what amount of energy will it radiate। क्योंकि 3 से 1 में आ रहा है तो एनर्जी वो रिलीज करेगा ना, तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना बच्चे, ये यहाँ पर माइनस है, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जो नया बच्चा है, क्या नाम है उसका, कृष्णा, बच्चे आपको समझ में आया आज का? Sir, for a hydrogen atom, right? फॉर हाइड्रोजन। So basically, we just have to find the two energies for the shells and then subtract them, right? Yes, basically you have to do this. Do we use the second equation, the -13.61? हाँ, this will be mentioned in the question that what unit you have to find, so you have to find it in electron volt per atom। ठीक है, electron volt वाला use करना। Although whenever Okay. you will be given the question in exam, they will mention it that कृष्णा है क्या क्लास में? यस हाँ, बच्चे समझ में आया आपको? अच्छा बच्चों, मैंने गूगल क्लासरूम पर एक सर्वे फॉर्म डाला था, आप लोगों ने वो फिल किया? एक बार रिपीट कर मैंने कहा मैंने गूगल क्लासरूम पे एक सर्वे फॉर्म डाला था, आपने वो फिल करा? Sir, I'll fill it today after class. I didn't. या प्लीज डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप फर्स्ट चैप्टर के डाउट सेशन रखने वाले थे सर हो गए थी जब बताओ कब रखनी है? सर मंडे या ट्यूसडे तुम लोग को एक बात बताओ, तुम लोगों के पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है क्या? एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करो कि तुम्हारा हो गया तो चलो ठीक है, हम लोग डाउट क्लास बोल देते हैं। बाकी सबका क्या है बताओ? थोड़ा एक दूसरे से थोड़ी दोस्ती वोस्ती भी करो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्या हो गया? सर हाँ, आंसर आ गया बताओ आंसर। सर इट विल लूज कितने 11.0009 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मिनट। मुझे एक बात बताओ, ये नेगेटिव में नहीं आएगी एनर्जी? सर लूज बोला है ना तो नेगेटिव साइन हो गया। हाँ, तो फिर नेगेटिव साइन। अच्छा एक चीज और मेरे को बतानी है, एनर्जी जब भी रिलीज होती है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ऑलवेज व्हेन एनर्जी इज रिलीज इट इज नेगेटिव एंड व्हेनेवर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इट इज पॉजिटिव। तो मेरे को आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मन से दिया था क्वेश्चन। सर जब मैं बोलता हूँ कि इट लूजेस 11.09 वो इलेक्ट्रॉन तो फिर वोल्ट स्टेटमेंट में हो गया ना, बट आपका जो कैलकुलेशन में आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। वो तो बात की बात है, अगर आप एक नीचे ये सर स्टेटमेंट वो लिख देते हो। नेगेटिव में आया है। हाँ हाँ, तो वो आंसर उस नेगेटिव में आना चाहिए। यस सर ठीक है, आप ऑल्दो आप आंसर निकालने के बाद लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, हेंस इट लूजेस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो अपना, और उसमें डिस्कस कर लिया करो चीज़ों को, थोड़ा और इजी हो जाएगा। Sir, so will the answer be a negative or positive? नेगेटिव। I also have to Okay. calculate the answer because I don't know the answer.
कितना बताया था तुमने अपना आंसर? किसने बताया था? सर मैंने आज क्या बताया था? सर 11.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11.2 Sir, I got 12.2 electron volts per atom. 12.2 है, 12.1 है, चलो ठीक है, 1 या 2। देखो तुमने क्या करी मिस्टेक, E1 माइनस E3 करा है ना, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E3। यस सर, हाँ, तो -13.6 प्लस कैलकुलेशन में 13.6। मिस्टेक हो गई है। हाँ, कैलकुलेशन में बच्चे ये मिस्टेक ही तो नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है जेई मेंस में ऑप्शन किस तरीके से आएंगे? 11 पॉइंट दिस, 12 पॉइंट दिस, 13 पॉइंट दिस, 14 पॉइंट दिस। तुमने अगर 11 पे टिक लगा दी तो क्या माइनस मार्किंग हो जाएगी? सर मैंने वो देखे हुए हैं उनके पेपर, सारे आंसर एक साथ होते हैं, और कभी कभी सर वो ऐसे एमसीक्यू दे देते हैं जहाँ पे अगर इस स्टेप पे जाओ तो ये आएगा, इस स्टेप पे गलत जाओ तो ये आंसर आएगा। हाँ, यही होता है जेई मेंस एग्जाम में, समझे? सारे, बल्कि जेई मेंस ही सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही होता है। ठीक है, पॉइंट्स में अगर कोई आंसर होता है ना 10 की पावर में, सपोज अगर आंसर 10 की पावर 9 में आ रहा है तो वो आपको ऐसे देंगे 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 11, 10 की पावर 10, इस तरीके से देते हैं। तो 10 की पावर का भी बहुत ध्यान रखना है, डेसिमल्स का बहुत ध्यान रखना है, खुले दिमाग से एग्जाम देना है, नीट में भी। कनीशा, Sir, so what's the answer? आंसर इज 12, 12.1. माय आंसर इज -12.1। Oh, I got -12.2. हाँ तो ठीक है, तो एग्जाम में तो इतना चलेगा, स्कूल के एग्जाम में, बट थोड़ा सा कंपटीशन में ध्यान रखना। बच्चे, कृष्णा जो है, कृष्णा आपका आंसर आ गया क्या? Isn't he physically there in the class? फिल्म से आवाज ही नहीं आ रही बच्चे की। चलो कोई नहीं, खैर, ओके। तो आई होप सबका आंसर आ चुका है। किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है? तो मेरा गलत था। तुम्हारा गलत आया है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे आएगा? यस। हाँ तो बस ठीक है, तुमने कैलकुलेशन चेक करी होगी। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन करो। अभी तो आप लोगों ने एनर्जी निकाली थी ना, अब आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी निकालनी है। बताओ फिर आज व्हाट्सएप ग्रुप कौन बनाएगा? Sir, I can make it. ले लो, सबके नंबर ले लो, और मेरा तो हो गई आपके पास शायद, मुझे भी ऐड कर लेना। Can गूगल everyone write क्लासरूम the में numbers लिख दे। in the मेरा, chat? हाँ तो मैं गूगल चैट बॉक्स क्लासरूम में। में लिख दे। गूगल क्लासरूम में तो तुम लोग कोई मैसेज ही नहीं पढ़ते हो, क्या ही फायदा वहां पे लिखने का? चैट डिसेबल्ड है, चैट में कैसे लिखे? चैट में ऊपर है, चैट ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा है चैट पे लिखने का? ऊपर सर होता है आप ये साइड। होस्ट या को सर होस्ट हमारे लिए डिसेबल कर रहा नहीं है। नहीं, चैट डिसेबल्ड है। अच्छा चैट डिसेबल्ड है, तो मेरे को देख। यस सर। वो तो Zoom मैंने कभी चलाया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कैसे होता है सिस्टम।
अब देखो, अब ऑन हो गया। यस सर। ठीक है, अपने अपने नंबर दे दो और आप लोग फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना। ठीक है, तुम लोगों के पास फोन होता है या पेरेंट्स का फोन होता है? Also, Okay. personal device है, सर like, फोन यहाँ है। पे गाड़ी फंस जाएंगी, दोनों तो गाड़ी लग जाएंगी, गाड़ी निकल जाएगी। ऐसे लगा देना ऊपर। इसका आंसर आ गया। सभी कर हम्म जब मैं तुम लोगों की एज का था, मेरे पास तो वो बटन वाला फोन हुआ करता था। व्हाट्सएप तो मैंने कॉलेज के बाद चलाना शुरू किया। क्या माइक नहीं काम कर रहा किसी का? अच्छा, कृष्णा का माइक काम नहीं कर रहा। 436 नैनोमीटर, लेट मी चेक। आई गेस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। 434 नैनोमीटर है। 436 है तुम्हारा। मे भी थोड़ी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई होगी, मतलब समझ में तो आ गया तुम्हें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E5। अच्छा, हमने E2 माइनस E5 क्यों करा है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 से 2 में जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना है। सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी। बच्चे फ्रीक्वेंसी निकाली आपने कृष्णा? वेवलेंथ तो ठीक है ऑलमोस्ट। Sir, H is Planck's constant, right? H is Planck's constant and we are talking about photon, the speed of light लेंगे हम लोग lambda निकालने के लिए। Sir, can you repeat that? I couldn't hear you. क्या क्या? अच्छा, H is Planck's constant and at least like this. H is Planck's constant and we will be taking speed of light
फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पर फोटोन की बात हो रही है, ठीक है। और लोग बताओ भाई, एक ने तो बता दिया आंसर। थोड़ा अपना कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। जो नया बच्चा है बेटा, आज का समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिख दो यस और नो इफ योर माइक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, good. It will be taking 2 or 3 days more to study properly with my handwriting, a good handwriting. तब तक आप लोगों को प्रेजेंटेशन से ही काम चलाना पड़ेगा। नोट में नंबर सेव कर लूं। तुम लोगों का पर्सनल नंबर है कि पेरेंट्स का नंबर है? सर पर्सनल है मेरा। बात है अच्छा, तो मैं आगे कर पर्सनल फॉर्म भी रखते हैं। तो मेरा पर्सनल ये बच्चा सीख रहा है। अन्ना चैटिंग वैटिंग तो नहीं करते ज्यादा? सॉरी सर। चैटिंग वैटिंग तो नहीं करते ज्यादा? सर बेयरली फोन यूज करता हूँ आजकल तो मैं। Krishna, if you also want to get added into WhatsApp group, then you can also share your number to Tanisha. अरे तुम लोगों ने आंसर निकाला है, इतनी देर लगाओगे क्वेश्चन में तो पेपर ही हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा पेपर का। कहीं पता चला अगर उसमें उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 घंटा निकल गए 5 क्वेश्चन करके बैठे हुए। Sir, I found E2 minus E5, but then I don't know how to find the frequency and wavelength. Last class में I told you ना how to find frequency if you know the energy. E is equal to h nu. पढ़ाया था यहाँ पर। Yes, sir. तो बस वही फॉर्मूला यूज करना है।
Sir, is the frequency 43.1 into 10 raised to power minus 34? नो, मैं एक मिनट, क्या बोला? 43 नहीं, गलत है। what is your delta E? चेंज इन एनर्जी कितना है आपका? Minus 285.6. आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है बच्चे? फ्रीक्वेंसी आपने हर्ट्ज में निकाली, विच इज सेकंड इनवर्स। आप एच की वैल्यू क्या यूज कर रहे हो? जूल सेकंड वाली ना, है ना? एच की वैल्यू Sir, तो आपको 6.6. एनर्जी जो आप निकालोगे वो आप वही वाला तो एक्सप्रेशन यूज करोगे जो जूल में है, यानी Oh, ये वाला जो फर्स्ट वाला है। अच्छा, yes, तुम sir. लोग ये गलती कर रहे हो क्या? तुम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ले रहे हो? नो सर, जूल वाला लेना है, इसलिए मैंने कहा एग्जाम में ध्यान रखना यूनिट्स का। You are taking Planck's constant in joule second, so energy should also be in joule. सब फ्रीक्वेंसी Okay, sir. फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? 6.9 into 10 to the power 14. हाँ ठीक है, वेवलेंथ निकालो। ये जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और अगर कोई बच्चा खाली बैठा हुआ है तो वो ये वाला क्वेश्चन कर लो, खाली मत बैठो। Pranjal, wait for 11th class to get over. By that time, you can be there in your class or leave, your choice. सर ये वाला क्वेश्चन हो गया कौन सा हो गया? जो स्क्रीन पे है हो गया? सर। क्या है आंसर बताओ? सर हाँ बताओ। एनर्जी है माइनस 8.72 into 10 raised power minus 18 जूल्स हाँ और रेडियस है 0.2645 into 10 raised power minus 10 मीटर या ठीक फिर है, उसको अगर एंगस्ट्रॉम में भी 0.53। निकाल दो तो दिक्कत नहीं। हाँ वो 0.2645 एंगस्ट्रॉम। तो 11th क्लास के बच्चों फिर मुझे बताओ कि डाउट क्लास कब रखनी है पहले चैप्टर के लिए? सब मंडे या ट्यूसडे। मंडे या ट्यूसडे? मंडे को होगी ना क्लास, मंडे को ही रखनी है। देखो इस वाले का आंसर है, एनर्जी है -8.72 इंटू 10 के पावर -18 जूल और रेडियस है 0.2645 एंगस्ट्रॉम। यही आया है? यस सर। ठीक है। और इस वाले का आ गया था, ये जो पहला वाला था जो मैंने इससे पहले ये दिया था, ये आ गया था आंसर। इसमें वेवलेंथ सर है आप 4। करवा दो एक बार। इसको करवा दूं बच्चे? एक तो यस सर। ये तो समझ में आ गया ना कि एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है अगर आपका ट्रांजिशन n=5 से n=2 में हो रहा है, ये सर आ गया। ठीक है? तो आपने एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? आपको उस एनर्जी डिफरेंस के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी ये निकालना है। तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा यही वाला, E=h/μ, ठीक है? तो ये आपका डेल्टा E, यस सर। ठीक है, ये आपका डेल्टा E हो जाएगा और आप इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर देना, आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी।
बस इसमें क्या था, वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ के लिए ये होता है फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सर हम फ्रीक्वेंसी से भी तो निकाल सकते हो। हाँ फ्रीक्वेंसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होती है ना। Yes. अब आ गया अभिनीत, करना है इसको घर पे। यस सर। ठीक है, ओके सर। ये चलो ये क्वेश्चन या तो कल करा देंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, इनको घर पे कर लेना। एक ये वाला ले लिया सबने, यस सर। और एक ये वाला ट्राई करना है इनको। Sir, can you go to the previous question? I didn't have time to take that. Thank you. ओके, थैंक यू।